हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस मार्केट अपडेट। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द मार्केट। सो यहाँ पर देखें ना, अगर हम बिटकॉइन लुक्स लाइक द टॉप इज़ इन, ओके, फॉर द शॉर्ट टर्म द टॉप इज़ इन एंड आई एक्सपेक्ट दीज लोज टू बी taken out at minimum. These lows, okay, these lows to be taken out at minimum, and at max if we get a correction for 2 to 3 months, which I'm expecting, so we will have a slow bleed like this here. Maybe we will range here, okay, then we will break out. So we can have a correction of 2 to 3 months, and it will be painful because the breakouts won't happen. Okay, the altcoin breakouts are not going to happen. Other thing which I've observed that for me the level is 36,000. I don't see it below 36,000, and it should be the last level. Bitcoin should respect it. If it doesn't respect it, then Bitcoin won't be holding it here. Okay, it will go below 30,000 if it doesn't respect the 36,000. Okay, at the top of that, we were expecting Ethereum to perform well, but it did not. It it shortly pumped at the initial stages, but it is going down again. It doesn't look good here. Okay, when something is bullish, it should not consolidate so much and take a lot of time, because Ethereum को तो आउट परफॉर्म करना था ना, यहाँ पे इसने नहीं किया है. तो ये रुकनी नहीं चाहिए थी चीज़ यहाँ पे. I think we can see a push towards downwards here around 2400, and for the invalidation यहाँ पर जो ये 2300 है, ये वाला जो लो है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए. अगर इथेरियम इसके नीचे चले गया, सो इथेरियम इज गोइंग टू बी बेरिश. ओके, वी शुड होल्ड these highs. Okay, this support we should hold. We can get a retest here. Okay, then we can pump. Okay, so this is less likely. More likely Bitcoin is important right now. Okay, so that's it. If you are going to buy alts, I would recommend you to wait for a while. And yes, the date where we can see volatility, we can see a pump, a recovery pump, it would be around 25th to 27th January. Okay, means the last week of this month. So what can be the possible scenario? This can be the possible scenario that Ethereum can go here, okay, consolidate here, and as we reach to the last week of the month, we start pumping, okay, and reach 3000, and that's it. Okay, and right now Ethereum is at the zone where it outperforms Bitcoin, but it's not outperforming Bitcoin. Okay, तो इसको करना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगता है. जब भी साइकिल कंप्लीट होता है बिटकॉइन का करेक्शन के बाद, इथेरियम साथ ही करके 1-2 हफ्तों में ही पूरा पंप हो जाता है 2 to 3x. उसके साथ ऑल्ट्स होते हैं, बट यहाँ पर इथेरियम नहीं ऐसे परफॉर्म कर रहा है. व्हाट डज दैट मीन? कि इथेरियम की तरफ अभी है नहीं, यूएसडी डोमिनेंस वहाँ पे जा नहीं रही है, और डोमिनेंस बुलिश है, डाइवर्जेंस बनाई है बहुत बड़े सपोर्ट के ऊपर. तो यहाँ से हमें पंप देखने को डोमिनेंस में यूएसडी के मिल सकता है, एंड इथेरियम जो है वो लैग कर सकता है, और इट कैन टेक सम टाइम. ओके, तो ऑल्ट्स देखते हैं कौन से ऑल्ट्स हम नज़र रख सकते हैं. पहला वू पे नज़र रख सकते हैं. वो आ सकता है इन लोज के पास. ओके, इट कैन टेक आउट दीज लोज, एंड सो यू कैन बिड अराउंड 0.35 to 0.3. okay, this is the area. Okay, this is the area where Wu can come. Okay, you can bid for the spot positions, and apart from that, keep in mind Metis. If Metis loses this $98, we can see a big crash in Metis. Okay, and that won't be getting recovered easily. Okay, we can see a take out the sweep of these lows. What are these lows? $70, and we can even go further down if Bitcoin reaches 36,000. Okay, so this is my scenario. Also have a look at Beam. I was expecting Beam to break out from here. It did break out, but it has given a fake out. It has rejected from these range highs, and I expect
these range lows now to be taken out, and then we can make a higher low here, and then we can pump further. So there is time. I think alts can go 40 to 50% down from the current market prices. Okay, but RNDR is looking strong. Only this coin and the blur, these two coins are looking strong, but we cannot bet right now on longs, because my 3 to 4 longs are didn't go well in the last scalps. So if it breaks 4.3, 4.4, then you can look for these highs, okay, and maybe a new high for RNDR. Okay, second coin is blur is looking fine, but ओवरऑल ये कौन सी सिचुएशन होगी, जो लास्ट ईयर में जब जनवरी में पंप आया था तो फरवरी मिड तक रहा था, मार्च अप्रैल फंसा फंसा सा रहा था, वही वाली सिचुएशन होगी है. ब्रेकआउट इज इन हैपनिंग, क्योंकि बिटकॉइन ने वो जो रिजेक्शन दिया ना, ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी सारा वॉल्यूम निकल चुका है. ओके, सो मार्केट में रोटेशन भी नहीं हो रही है. रोटेशन कुछ नए कॉन्स में से शायद जो है इसमें हुई थी. मेरे को लग रहा था ये फोर्थ वेव है, मे बी अगर ये लो होल्ड करता है ना, शायद का तब भी ट्रेड बन सकता है. अगर ये लो होल्ड करता है, ये सपोर्ट क्या है 0.94 जो होल्ड करता है, तो ये 1.2 और 1.4 1.5 तक जा सकता है लास्ट वेव के लिए. और उसके बाद में हमें फिर करेक्शन एक सेकंड वेव देखने को मिलेगी यहाँ तक 0.7 के आसपास. यहाँ पे बाइंग अच्छी बनेगी शायद की. ठीक है, शायद काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और ये लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाला है. Okay, so after that, let's have a look at ETH BTC. ETH BTC is jumping now. What the hell? Okay, it can come around this zone. ETH BTC can come around this zone, which is 0.055. Okay, mean 10% down. Ethereum can come to $20 to $2,300 in USDT, I think so. So it should bounce from here. If it doesn't bounce, then the whole rally can dump. But ये वाला केस काफ़ी लेस लाइकली है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, वेट करना होता है, तब ट्रेड करना होता है. ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. यहाँ से बाउंस आया तो देन वी कैन गो हाई, तब इथेरियम जाके आउट परफॉर्म करेगा, 3300 3500 जा सकता है. ओके, सो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि अगला प्ले आपको कैसे करना है. तो अभी पता है 2-3 हफ्ते रुक जाओ. 24, 25, 26 जो ये जनवरी लास्ट वीक है ना, तो इसका वेट करो. इसके आसपास जब अगर बुलिश सेटअप बन रहे दिख रहे हो तो आप एंटर कर सकते हो. तो मे बी हमें एक ना थोड़ा सा छोटा पंप देखने को मिल सकता है मार्केट में. तब तक मेरे को लगता है कि बिटकॉइन नीचे यहाँ से डंप हो करके ये लोस उठा लेगा. जब बिटकॉइन ये वाले लोस उठा लेगा ना, तो जहाँ पे ये रिक्लेम करेगा, तो फिर यहाँ से साइडवेज जाएगा, ग्रोथ करेगा धीरे धीरे, तो ऑल्ट कॉइन फिर पंप होंगे, तो तब एंटर करना. अभी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है. मैं अभी एंटर करना रिस्की है. ओके, कोई बिटकॉइन का भी मूव पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, तो वो ऑल्ट्स को नीचे ड्रैग कर लेगा. सो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्लान कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी देख सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो भी कर सकते हो. वहाँ पे मैं सेटअप डालता हूँ, एनालिसिस डालता हूँ. ठीक है, कोई वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है. और हाँ, अगर आपको सीखना है TA इन एवरीथिंग आई नो, तो आप साइट पे जा सकते हो www.tradeschool.com. वहाँ पे कोर्स को एनरोल कर सकते हो. कोर्स का प्राइस बहुत ही कम रखा हुआ है. ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.